So here is the topic, research types and designs. What do you mean by types and designs? A design is basically, you could say, the blueprint of how you will be doing your research. This is more like a structure of how you will be doing your research. For example, I say that I would like you to make a scenery, and then I would like you to have a basic design of your scenery to be so that you do have mountains here, and somewhere you have mountains, and then you have river, and then here you have house, and then you here have trees. So kind of a structure. Okay, it doesn't mean that this is your painting, no, kind of structure that you are giving to your research. That design, that structure is not your research. You'll be doing your research, you'll be conducting it practically, but this is the blueprint, this is the rough design of how you should be doing your research. Now, what do you mean by types? Types is basically of how many different ways you have to do your research. So as every research is different, so you can have n number of types to do your research. But then there are few broad types which are fruitful to attempt in specific situations. आप जितने भी रिसर्च करना चाहते हैं उतने ही उनके टाइप्स हो सकते हैं। अगर आप कोई नया मेथड अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई नया अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, आपका जो आइडिया है वो बिल्कुल नया है, आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हर बार वो एक रिसर्च जो है वो नया रिसर्च बन जाएगा। लेकिन कुछ ब्रॉड स्ट्रक्चर्स ऐसे हमारे पास अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे टाइप्स हैं, कुछ ऐसे नमूने हैं जिनके अंदर अगर आप फिट करते हो अपना स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर उसको एक डायरेक्शन मिलती है, वहाँ पर उसको एक आगे बढ़ने का, जिस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, जिस तरीके से आगे मूव करना है रिसर्च में, उसको लेके प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मिलते हैं। और ये जो रिसर्च के टाइप्स हैं, इनको डिवाइड करने के भी बहुत सारे रीजंस हैं और बहुत सारे बेसिस हैं। सबसे स्पेसिफिक और बेसिक आइडिया यही है कि व्हेन यू आर डूइंग अ रिसर्च, द टाइप्स or the kind of research that you are doing depends on your methodology. Okay, वो सबसे basic है. For example, if you're doing a survey, then your research is a survey research. If you're doing a case study, then your research is a case study. If you're doing a content analysis, then your research is a content analysis of something. So these are very basic, but even you could say much more important to it, or much more broader than this, is the upper structure that you have, जिसके अंदर ये सारे methods आते हैं। तो आज हम उस broad structure को लेके discussion करने वाले हैं। Case study आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी कर सकते हो, एक्सप्लोरेटरी में भी कर सकते हो, एक्सप्लेनेटरी में भी कर सकते हो। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जो है वो किस तरीके से है, उसको लेके आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। So let's start from the first difference, or you could say the first base of division here between types of research. Number one is basic and applied research. Basic और applied research जो है उसका division है on the basis of purpose. Purpose क्या है research का? Basic research says that the purpose is to gain pure knowledge. So what is the purpose here of doing research? The purpose is to gain pure knowledge. But when it comes to applied research, the purpose is to take action. Purpose is to take action, because only the result of an action could be applied. And basic is something which is very raw, something of very foundational importance. So it is pure knowledge, which is going to help in each and everything that you do in your world. So this is basic and applied research. You also call it market research, because market people, they only do applied research. They want immediate solution to their issues. And then you have basic research as fundamental research, because this is fundamental, just like other fundamental things are very basic and very pure for your work. Then you have this type, qualitative and quantitative.
दिस डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इन्वॉल्व। डेटा जो आप यूज़ करने वाले हैं अपने रिसर्च में, जो आप इंफॉर्मेशन यूज़ करने वाले हैं, जितना भी आप कलेक्शन करने वाले हैं इंफॉर्मेशन का, फैक्ट्स का, ओपिनियन का, एटीट्यूड का, वो किस तरह का डेटा है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। इसके बेसिस पे आपके रिसर्च के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। आप इंटरव्यू अगर ले रहे हैं तो दैट विल बी अ क्वालिटेटिव रिसर्च, उसमें से क्वांटिटेटिव डेटा निकालना बहुत मुश्किल है। बट अगर आप सर्वे कर रहे हैं, इट विल गिव यू मोर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसमें क्वालिटेटिव डेटा निकालना मुश्किल हो जाता है। कितना आप क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ लेंगे, कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछ लेंगे एक सर्वे के अंदर, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्वांटिटेटिव ईजी हो जाता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च को जनरेट करना ईजी है। क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं, केस स्टडी कर सकते हैं, वहाँ से लिटरेचर रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेटा इन्वॉल्व की बात है। डेटा इज इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स क्वालिटेटिव, और इट इज इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, दैट इज न्यूमेरिक, यानी कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। Then is research the basis of the condition, the scenario or the place of research, यानी कि किस कंडीशन में रिसर्च करा जा रहा है। कंडीशन इज फील्ड और कंडीशन इज लैब। आप लैब में रिसर्च कर रहे हैं, आप फील्ड में जाके रिसर्च कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि कम्युनिकेशन जैसी चीज जगह पे लैब क्या होगी। लैब कुड बी, जस्ट टेक दिस एग्जांपल, लेट्स से आई वांट टू सी the impact of watching a film on the mental state of youngsters। किसी एक जगह पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कि अभी एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है which shows a lot of you could say conflicting content related to LGBTQ community, and I would like to see how it impacts the mental state of youngsters. So what I'm doing, I'm dividing the youngsters into two groups. One group will be having access to go home, to watch TV, to talk to their friends, to talk to other people, maybe meet somebody in social circle. But one group will be given no access. It will be monitored in closed laboratories. That means you will have a location where you will be showing them the film, but they will not be allowed to go out. They'll be watching it individually, sitting on their own in separate rooms, and then they will be on their own. So this is closed environment, lab environment, open environment, field environment. इस तरीके से आपका environment कैसा है, condition कैसी है, उसके basis पे भी आप research को divide करते हो. The only difference that you have here is, here you have control. So you can also say that this is on the basis of control of the researcher. Here you have control, here you have no control. ऐसा हो सकता है कि उस फिल्म का impact बहुत ज़्यादा पड़ता, but because you have talked to your parents, you have talked to your family members, so you are feeling relaxed. Okay, just take a situation. A youngster goes to watch this film who himself feels that he has some very different way of talking about his preferences in terms of having a partner. So he comes back, he talks to his friends are okay with it, he is all alone and then he is stressed. So that could be one kind of condition. Controlled environment, lab environment. Uncontrolled or having no control, that is field environment. And then this is the last one. This is the major one which we are going to study. Why this is the major one? Because the methods that you'll be applying or that you'll be using in these different types, 4 types here, can also be categorized as qualitative and quantitative. उनको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम उसमें वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं या क्वांटिटी या नंबर्स को यूज कर रहे हैं। और बेसिक और अप्लाइड को भी उसमें यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर डूइंग द रिसर्च फॉर सम इमीडिएट एक्शन, for some market company, for some advertisement company, for some other kind of profile where they'll be using the result, or we are just doing it for academic purpose like PhD or something. So this is pure knowledge work. Okay, so these two will be covered.
Now talking about this, ये जो है इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, but after studying this. First, we are going to talk in detail about these types of research, and these types of research are on the basis of approach, on the basis of methods used, on the basis of what you are looking forward to डू बाय योर रिसर्च. आप क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, अप्रोच क्या होने वाली है आपकी, और आपका नेचर ऑफ रिसर्च क्या होने वाला है, बेसिक nature of your research, what it is going to be. This is what distinguishes these four types of research. Is it clear? Hello? Hello? Oh, okay. So just give me a second. I'll just rub these so that I can write more here. Okay. So here you have number one, descriptive. Descriptive comes from the word describe or description. किसी चीज को describe करना. Then another is exploratory. Exploratory. This comes from the word explore. अभी हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं पहले. So here you have these two types, descriptive and exploratory. Now just imagine that, let's take very simple example. Some friend of yours have told you about a new place to visit. आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया है कि कोई नई जगह है, मे बी सम गुड रेस्टोरेंट, मे बी सम गुड टूरिस्ट स्पॉट, मे बी समथिंग एल्स, एंड दैट यू कैन गो एंड विजिट. इट्स अ नाइस प्लेस टू गो ऑन वीकेंड्स. ओके, अब आप वहाँ पर अभी तक गए नहीं हैं. So what you will do? You will explore that place. आप उस place को explore करेंगे. You will find out वहाँ जाना कैसा है. You will find out वो कैसी location है. You will find out वहाँ खाना कैसा मिलता है. You will find out what kind of environment that place has. So you will be exploring each and everything related to that place. This is one example. Take another example. कोई जगह आप गए हैं, and then you have to give description of that place to your friend. So what you'll be doing, you'll be describing how the place is. You'll be talking about how you can reach there. You'll be talking about what kind of food is available. You'll be talking about which you think is the plus point, which you think is the negative point. You'll be telling about what is the basic environment there, what kind of company or people you'll be meeting there. So this is description. यही फर्क है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. जब आप कोई ऐसा रिसर्च कर रहे हो जिसमें नो प्रीवियस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कोई भी पहली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट यू डू, यू एक्सप्लोर द टॉपिक. आप उस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हो. आप अपने एक्सप्लोरेशन के बेसिस पे जो बेसिक टर्म्स यूज होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, उन तक को भी डेवलप करते हो. ये एग्जाम्पल आप अप्लाई कर सकते हो सेम वे जैसे कोविड-19 के रिसर्च में लोगों ने करा होगा. जब कोविड-19 जो पहली बार वायरस लोगों को पता चलने लगा होगा, तो इससे रिलेटेड रिसर्च जब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने स्टार्ट करा होगा, तो उस टाइम पे ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही होगा. People would be figuring out what name they can give to this virus. How can they talk about the spikes which are there on this virus? How does it attacks the lungs? What it does? How can we say which thing will help us in fighting this virus? Okay, protein will be a good thing to use it. तो ये सारी चीजें जो बेसिक एक्सप्लोरेशन है उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं, जिसमें यू फिगर आउट व्हाट योर रिसर्च टॉपिक इज, in which as a researcher you are figuring out what your research topic is. You are trying to develop the hypothesis.
only trying. It is possible कि आप नहीं कर पाए, but you do try to develop the hypothesis. आप कोशिश करते हैं एक hypothesis को develop करने की. और यही वजह है कि सोशल साइंस में इस मेथड के अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिटेल्ड मेथड्स मिलते हैं रिसर्च के, जैसे कि यू गो अबाउट इन डेप्थ इंटरव्यूज. आप इन डेप्थ इंटरव्यूज लेते हैं, बहुत डिटेल्ड इंटरव्यूज. आप फोकस ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, यानी कि आप एक ग्रुप बना बना के अपने सैंपल का, रेस्पोंडेंट का, उनका डिस्कशन भी करते हैं. You also go for case, not case study as a case study, but you also go for document study where you can just figure out what things are available to you. So these methods हम इनको डिटेल में दोबारा डिस्कस करेंगे after talking about all the methods. Coming back to डिस्क्रिप्टिव, जैसे मैंने आपको आइडिया दिया था डिस्क्रिप्शन से, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज को. सो हियर idea is to tell you what the thing is. Whatever you're talking about, whatever your research topic is, you want to talk about what the thing is, how you can talk about it, what it is. If I say that, here is this gadget, then somebody could ask you, describe what it is. So you will be describing, this is a mobile, this is smartphone, you have these features, you can do this, you can do that. So giving a description. So when you are doing a research where you are describing what it is, for example, you are talking about simply, you're talking about, let's say, photo features in newspaper. So what is a photo feature? So you'll be telling that photo feature is about creating a feature, creating a story out of photos, putting photos in series and giving you a story. So this is how you'll be talking about it. It has to be in sync with emotions. It has to be like this. So you'll be giving all the description of how a photo feature should be. And maybe you'll be using examples also. So here you have a research where you need to give description, जहाँ पर आपको description देना है, जहाँ पर आप वो चीज क्या है ये बता रहे हैं. दोनों में ही variables use होंगे, लेकिन दोनों में तरीका अलग है. यहाँ पर you are not sure that you do have a variable or not. आपको concepts आपके दिमाग में, आपके पास rawly और vaguely available हैं, उन्हें आपको proper करना है, precise करना है, then you have to develop variables. Here you do have variables. Okay, for example, let's say camera shots in contemporary films. So you know what camera shots is, you also know what contemporary films are, and then you'll be taking 4 or 5 films and you'll be talking about camera shots in those films. This is basic description. That is your descriptory research. So this is exploratory, this is descriptive research. Now we'll be moving to other two types, diagnostic and explanatory. So third one is diagnostic. Diagnostic comes from the word diagnose. Who does the diagnosis? कौन करता है diagnose? जो physicians होते हैं. Whenever you will go to a hospital, you will not straight away meet the expert. सबसे पहले आप expert से नहीं मिलते हैं. सबसे पहले आप एक general physician से मिलते हैं. वो general physician आपकी body को check करके diagnose करते हैं where do you have the problem, and then that person will be sending you to the experts. So now the fourth one is explanatory. This comes from the word explain. Okay, so here you have these two types, diagnostic and explanatory. Diagnostic comes from the word diagnose and this is very close to medical sciences. ये medical sciences के बहुत ही close है. जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, so what the doctor will do? Doctor will try to figure out what problem do you have. Okay, you have cold. So what he or she will do? He or she will try to figure out कि reason क्या है यहाँ पर, किस वजह से आपको problem हुई होगी. So you have cold. Reason could be maybe you got wet in rain, or maybe you have eaten something very cold or chilly. So now
The idea is to provide you solution. So he has to know about this because solution will depend on the diagnosis. Cold आपको है वो आपको भी पता है, लेकिन diagnosis आपको cold है, so only your throat is affected, or maybe your lungs are also started getting affected, or you might be developing fever, or you might be having body ache. So this is what the diagnosis is. ये डायग्नोसिस जब होगा तभी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा. मे बी द डॉक्टर इज नॉट एबल टू डायग्नोस दैट यू हैव बॉडी एक, ही इज ओनली गिविंग यू मेडिसिन फॉर थ्रोट, तो आपका सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं है. डायग्नोस्टिक रिसर्चर का काम भी यही है. लेट्स से द प्रॉब्लम इज दैट there is this company, newspaper organization or TV channel company, they have seen reduction in the viewership or in the readership. किसी भी चैनल और किसी भी न्यूज़पेपर के जो रीडरशिप है या व्यूअरशिप है उसमें रिडक्शन है. अब कम लोग देख रहे हैं या कम लोग पढ़ रहे हैं. सो प्रॉब्लम इज द रिडक्शन इन द व्यूअरशिप. तो एज अ रिसर्चर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डायग्नोस what is the problem. Problem क्या है? Maybe the problem comes that now you are not providing the kind of information earlier you have been providing to people. You have changed the way now you are giving news programs. So what you have done, you have made news programs more political now. Earlier they were more general. So because of political content you have seen the reduction. So the solution could be that you have to reduce the amount of political content. अब ये जो reduction है, this will depend on the way how your size has been reduced. Maybe the researcher will say that don't do it suddenly, otherwise people will notice it. Do it gradually and slowly. So that will be another solution. इस तरीके से एक diagnostic researcher जो है वो आपको solution देगा. ये solution मैं भी आपको verbally दे रही हूँ, but जो researcher है वो ऐसे verbally नहीं देते हैं. They will be doing the research. वो आपके पूरे एक साल का डेटा स्टडी करेंगे, टीवी प्रोग्राम को स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे आपके कब तक पीक पे थी व्यूअरशिप, या लोग जो सबसे ज़्यादा पढ़ते थे न्यूज़पेपर वो किस टाइम पे पढ़ते थे, कब से कम होना स्टार्ट हुआ, ट्रेंड कैसा रहा है. सो फ्रॉम वेयर द पीपल दे स्टार्टेड बैकिंग ऑफ फ्रॉम योर न्यूज़ चैनल और योर न्यूज़पेपर्स, तो कहाँ से रिडक्शन है वहाँ से आपका डायग्नोस करते हुए दे विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशन. दिस इज डायग्नोस्टिक research. Now coming to here, coming back to explanatory. This comes from the word explain. Explain, what will you explain? You will explain what is the cause and what is the effect. This is what you will be explaining. So here the research is based on cause and effect relationship. Here the research is based on hypothesis testing. Here the research is based on why a certain thing is the way it is. अगर हम लोग इसी सेम एग्जाम्पल की बात करें, so in this research you are not concerned with the solution, you are more concerned with whether this is definitely the reason for the problem or you have some other reason. और यही वजह है कि एक्सप्लेनेटरी में आप एक कॉज को ढूंढने में ज्यादा इच्छुक रहते हैं. यू आर मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग द कॉजेशन rather than कोरिलेशन, बिकॉज कोरिलेशन आपको एक्सप्लेन करने में हेल्प नहीं करेगा. कोरिलेशन होगा तो आप नहीं बोल सकते हैं दैट ये एक कारण है और इसका ये इफेक्ट है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि पॉलिटिकल कंटेंट था इसीलिए व्यूअरशिप कम हुई है. ये आप कॉजेशन में बोल सकते हो जब एक ही रीजन हो. अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल कंटेंट भी बड़ा है, स्पोर्ट्स कंटेंट भी बड़ा है, नेशनलिस्ट कंटेंट भी बड़ा है, so then you don't know which problem to point out and how to give the solution. So in order to reach to this situation you are supposed to give cause and effect. आपको cause and effect बताना जरूरी है. तो ये 4 रिसर्च हैं जिनके अपने अलग अलग फैक्टर हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं. इनकी डिटेल में हम कल बात करेंगे बिकॉज सबके ही अलग अलग मेथड्स हैं जो आपको यूज करने हैं. क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव तरीके से भी उनको डिस्कस करेंगे और फील्ड और लैब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी उनको डिस्कस करेंगे. ओके